Hello everyone. Welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on crude oil. Crude oil price is in strong downtrend characterized by lower high, lower lows. Despite today's gain of 28 points, the failure to breach the upper resistance of descending channel suggests bearish sentiments remain intact. The formation of doji candlestick pattern further confirms continuation of bearish trend. However, the key support level is at Rs 6170 level. A break below this level could trigger the further declines, with the next target level at Rs 6080 and Rs 5950 level in near term. The key resistance is identified at Rs 6350 level. The MACD indicator is below the center line, reinforcing the bearish momentum expectation in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल प्राइस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ मूव कर रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेंड बेरिश है। क्रूड ऑयल प्राइस ने आज प्लस 28 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज दिया है। क्रूड ऑयल प्राइस ने अपर चैनल बैंड को ब्रेक करने में असफल रहा है और साथ में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जिससे ये पता लगता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश ट्रेंड आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखा जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रुपीस 6170 लेवल पर है। अगर ब्रेक करता है तो रुपीस 6080 और रुपीस 5950 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुपीस 6350 लेवल पर है। MACD इंडिकेटर सेंटर लाइन के नीचे है, जिससे ये पता लगता है कि बेरिश मोमेंटम है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.